Assalamu alaikum to everyone. Walaikum salam, sir. Is my voice clear to both of you? Yes, sir. Okay, just wait for some more students to join, then I'll start the session. It's about media discourse analysis. Okay, sir. Let's wait for a few minutes and then inshallah things will start. So before I start this session, I would like to ask a few things regarding this course, Media Discourse Analysis. Is this your first experience taking this course of Media Discourse Analysis? Am I audible to all of you? क्या मेरी आवाज आप सब लोगों को आ रही है? Yes, sir. Are you? अच्छा, तो मैंने एक सवाल पूछा है कि मीडिया डिस्कोर्स एनालिसिस क्या इससे पहले भी दिस इज योर लास्ट सेमेस्टर मींस आप लोग का 8वां सेमेस्टर है and you have studied 7 semesters, so you are very nearly about to complete your studies inshallah. So is this your first experience or you have read this subject or to some extent read this subject, because it is a very interesting subject, media discourse analysis. Nowadays media is everywhere. We cannot stay away from media. Media in the form of many things. In fact, it is without media we cannot survive. This is something that we have nowadays. तो कोई मतलब ये कि सब्जेक्ट जिसमें आपने इसको पढ़ा हो, डिस्कोर्स को आपने स्टडी किया हो? Yes, sir. We have studies discourse analysis in our first semester. So you studied discourse analysis in your first semester. So can anyone share any experience, anything that he or she still remembers regarding discourse analysis? So that may start, I may have some idea. कोई ऐसी चीज जो आपके ज़हन में हो, जो अभी भी आपको याद हो डिस्कोर्स एनालिसिस के हवाले से? You can share, don't worry about this, whether it is right or wrong. Yes, come on, waiting for your reply. कोई ऐसी चीज जो आपके ज़हन में हो about media, about discourse or about media discourse? Sir, I remember that discourse is communication and conversation, whether it's written or oral. Whether it is written in written form or oral form, right? It is a form of communication. ठीक है, very good. और कोई? Is there anyone else who wants to share his or her learning experience here at this platform? Yes, Hariya. We have 8 students right now, 8 participants. Discourse analysis में और क्या क्या आप लोगों ने पढ़ा? Analysis का मतलब क्या? What does analysis mean? What does this word mean? Yes, Hariya. Analysis का जब हम जिक्र करते हैं, so what does it mean?
कुछ तो जहन में होगा. It is a very common thing. It's not something that we should forget. It is something that we should remember, because in our everyday life we have to analyze different things, especially if we talk about discourse. So there are different types of discourses which we have to analyze. Yes, sir. If I say it in Urdu, analyze means तज्जिया करना. तज्जिया करना, ठीक है. और मिसाल के तौर पर तो इसकी मिसाल दीजिएगा. जस्ट वेरी गुड. कोई मिसाल इसकी अगर आप दे सकें. सर जैसे किसी भी चीज को सोचना, उससे लिखना या बोलना, आई थिंक किसी भी चीज को एक्सपीरियंस करना. experience करना, right? Actually, when we talk about the analysis, so it means that we are trying to examine the effect of that particular thing. For example, there's a sentence. एक sentence है, मिसाल के तौर पर ये जुमला है. Let me write it over here. For example, there's a sentence. Can I help you? जवाब दिया, no, you can't. एक और जुमला है, can I help you? The reply is no, thanks. Thanks a lot. Now, if we analyze these are discourses right now. If we analyze them, so what do you think about the first one? पहले वाले के बारे में क्या 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 समझ आ रहा है? Can I help you? The reply is no, you can't. You have to analyze this part. इस part को analyze करें and tell me what do you understand by the analysis. Yes. Can I help you? The answer is no, you can't. On the other hand, can I help you? The answer is no, thanks. Thanks a lot. या अगर इसका आप affirmative positive लेंगे तो yes, you can. यहाँ पे अगर आप लेंगे तो यहाँ पे होगा yes, please. So what do you think about these both? First this one and then this one. दोनों के बारे में क्या आप what do you think? How do you analyze them? Anyone can participate. Yes. Yes, come on. Can I help you? No, you can't. Yes, you can. This is negative answer. This is answer in negative, and this is answer in positive. Same here below. जब आप, as I told you that when you talk about discourse analysis, so it means that we have to analyze all types of discourse. Discourse analysis covers all types of discourse like political discourse, media discourse, or any other types of discourse, right? So it's a very broad analysis. It's a very broad term. Here we are talking about media discourse analysis. Here we are specifying ourselves only to media, but we should know about analysis, what analysis is or are, and we should know about discourse, what discourse is, and we should know about these basic things like what is media or what are media. तो ये आपके पास मैंने दो पेयर ऑफ जो हैं शॉर्ट क्या कहेंगे इसे हम डिस्कोर्सेज रखें. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट देम? फर्स्ट वन को एनालाइज करके बताएं कि उसमें क्या मतलब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एनालिसिस ऑफ द फर्स्ट वन एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एनालिसिस ऑफ द सेकंड वन. यस हरी, इट्स वेरी सिंपल. थोड़ा सा आप कोशिश करेंगे सो इंशाल्लाह यू विल टेल मी नंबर ऑफ आंसर्स.
Yeah, at least you should try. Yes, hurry up. एक छोटी सी कोशिश करके देख लें. You can see, can I help you? The answer is no, you can't. Yes, you can is positive answer. And on the other hand, can I help you? Here reply is the, no, thanks a lot. Or positive answer means yes, please. So what is the difference between these two, you know, uh, discourses? यस, कोई कोशिश तो करें, थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह इससे आपको फायदा होगा. I will not mind if you tell me the wrong answer. Doesn't matter. I will appreciate everyone. I will appreciate every that student who makes efforts. Efforts are required. याद रखिएगा, जो स्टूडेंट जितना ज़हीन और टैलेंटेड हो, जब तक कोशिश नहीं करेगा तो उसके टैलेंट और उसका ज़हीन होना जो है, ये दोनों यूजलेस हैं. But if students make efforts, it means that one day he will or she will succeed. तो आप कोशिश करें, थोड़ा देखें इसको. This is called analysis. For analysis, we must know about the parameters as well. We must have knowledge as well of that particular thing. Yes, there is no one. It's very simple. थोड़ी कोशिश करके कोई तो इस पे पार्टिसिपेट करे. It's not difficult. Whatever you understand, you can share. Yeah, am I audible to all of you? मेरी आवाज तो सबको आ रही है ना? Yes, sir. तो देखें, अगर आप लोग नहीं बता रहे, चले मैं आपको बताता हूँ. कोशिश करने में कोई अर्ज नहीं और ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं. इट्स अ जनरल थिंग व्हिच आई हैव मेंशन्ड टू यू. And as I told you, that discourse is something that is everywhere. Whatever we speak, so whether it is in written form or spoken, they are called, they are related to discourse. Can I help you? No, you can't. Yes, you can. When you analyze this particular discourse, you will find here that here you will find rudeness. What you will find here? Rudeness. If somebody offers you his or her help, what will you say? No, you no. What you will say? No, you can't. If you say no, you can't, it means you are rudely replying to that person. You are very angry to that with that person, and your attitude is very rude. ऐसे ही ना भाई, कोई अगर आपको है ऑफर करेगा मदद की, या कोई भी किताब ऑफर करता है, कुछ भी आपको ऑफर करता है और आप उसको डायरेक्टली मना कर दें, तो ये क्या कहलाएगा? दिस इज कॉल्ड नेगेटिव और एटीट्यूड. इसी तरह से अगर कोई आपको जो है ऑफर करता है हेल्प और आप उसको जवाब में कहते हैं नहीं शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, नो थैंक्स अ लॉट. So you are refusing to accept his or her help, but in a very polite manner. Politeness, in a very gentle manner. So this is the right way. And here you'll show your positive attitude. Or if you accept that one, then you will say, yes, please. Is that clear? So here, remember, it's not like this that you should give the answer. Remember, there are many cases in which we have questions, but those questions are not questions. ये सवालात नहीं होते. मिसाल के तौर पर मैं आपको एक मिसाल और देता हूँ. यही कि दिस इज व्हाट वी कॉल एनालिसिस. इसी को हम एनालिसिस कहते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ आई से कैन आई हेल्प यू, कैन यू हेल्प मी, कैन आई यूज योर computer, can I come in the room, can he drive the car? Now you can see there is one model verb, that is can.
and I have made many sentences with the help of can by changing pronoun, right? Now, can you tell me about the first one? Can I help you? What does it show? What does it mean? What does it indicate? What sense do we get from this particular sentence? जो सेंस हमें Empathy. समझ में आएगा उसी का जवाब हम देंगे. तो पहले वाला जो है क्वेश्चन क्या है, वाकई में क्वेश्चन है? इज इट क्वेश्चन इन रियलिटी? द फर्स्ट वन, कैन आई हेल्प यू, इज इट क्वेश्चन इन रियलिटी? यस सर, ये अभी बताया था आपको. In all, one thing is common, they all are use, they all have taken the word, the model word verb can, but you'll find only one thing different, that is subject. With the due to the differences or difference in subject, you'll find senses or sense is also changing. So can I help you? What does it mean? यहाँ एक ही चीज को indicate कर रहा है. That's empathy, I think. What? Yes, yes. Empathy. मतलब हमदर्दी को. हमदर्दी, can I help you? Okay. हाँ. और कोई इस पे बताना चाहेगा? Can I help you किस चीज को शो कर रहा है? Very good. देखिए, can I help you शो कर रहा है ऑफर को. You are offering somebody else something. Can I help you, or can I bring a glass of water for you? ठीक है. Can I do it for you? Well, means आप उस शख्स ने आपसे नहीं कहा कि आप ये इसके लिए करें, but you are doing it for yourself. It means you are offering your services or you are offering something to that person. So the sense that we get from this particular sentence is offer. Can I do it for you? It means you are not taking his permission or you're not seeking his permission. You are just politely offering that person your help or your service. Is that clear to all of you? So this is politeness. In polite form, we have this offer. अब ये सवाल नहीं है. जब सवाल नहीं तो उसका जवाब भी यस नो क्वेश्चन वाला नहीं होगा. अगर आप देंगे तो वो रूट कहलाएगा. अब इसका जवाब जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप कहते हैं कैन आई डू इट फॉर यू, तो अगला अगर आपसे आपको सब उसका जवाब तो हर चीज का है. याद रखिएगा, डिस्कोर्स में जवाब हर चीज का होता है. जो भी जुमला होता है उसका जवाब होता है. तो कैन आई डू इट फॉर यू, तो आपने उसका जवाब क्या देना है? यस प्लीज और नो थैंक्स, थैंक्स अ लॉट. अगर आप इसका डायरेक्ट जवाब देंगे नो यू कांट, तो ये एक रूट जवाब हो जाएगा. ठीक है, ये हमारी एनालिसिस है कि ये एक रूड आंसर. और व्हेन यू से यस प्लीज और नो थैंक्स, so it is definitely the right answer. Is that clear? Yes, sir. फिर इसके बाद है can you help me. Now what do we have here? यहाँ पर क्या है? Request. Yes, very good. Very good. Here we have request. Now here we have request. This is actually what we call you're requesting somebody else to help you. ठीक है. डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सबसे मेन मसला क्या होता है? हमें डिस्कोर्स समझ में नहीं आता. हमें जो टेक्स्ट, हमें जो ये जो है डिस्कोर्स का समझ में नहीं आता है कि असल में सेंस क्या करने कर रहा है. So when we don't understand the sense, what happens that we do not understand what direct is. Indirect में क्या करते हैं? We have to convey the message of that person in our own words. So for this purpose, first of all, we have to understand what the message is about, what the sense is about. When we understand the sense, then we can easily convert it. फिर उसके बाद हमें वो जो फॉर्मूला और वो जो चेंजेस होती है वो करनी होती है. तो डायरेक्ट में सबसे बड़ा मसला जो स्टूडेंट्स को दरपेश होता है वो यही होता है कि उसको बेचारे को सेंस ही नहीं पता चलता. जैसे अभी आपने कहा कि सर रिक्वेस्ट है, you are absolutely right, it is request. So can you help me? Request. This is request. तो इसका जवाब क्या आएगा? Yes please. You know, आप कहते हैं yes you can. ठीक है, क्योंकि ये रिक्वेस्ट है. Yes please, no thanks, thanks a lot, इस तरह से करके आप उसको मना कर सकते हैं. Can I use your computer? What does it mean here? What does this convey? What is it conveying? Yes. Can I use your computer? Permission. Yeah, you are seeking permission. एक तो होता है giving permission, here you are seeking permission.
So here the sense of permission is there. Can I use your computer? तो यहाँ पे आप कहेंगे yes, please or no, thanks तो आप कहीं नहीं कर सकते, कह सकते, आप simply कहते हैं yes you can or no you can't. Can I come in the room? What does it mean? Again, you are seeking permission. यहाँ पे भी permission ही का sense है. And the last one, can you drive the car? What does it mean here? What sense does it convey? Asking question. Yeah, here somebody, here you are asking about the ability of somebody else. यहाँ किसी की ability के बारे में पूछ रहे हैं. Can you drive the car? तो जवाब आएगा yes he can or no you can't. तो जब ऑफर की बात आएगी, रिक्वेस्ट की बात आएगी, तो फिर आपने उसका जवाब इस तरह से नहीं देना है जिस जो नॉर्मली हम देते हैं शॉर्ट आंसर. लेकिन इसके अलावा अगर परमिशन मांग रहे हैं, दीगर चीज़ों के अलावा कुछ पूछना चाह रहे हैं, then that is called real question and we have to produce yes no answer, right? So all these things we learn through analysis. Analysis very important. जब आपने analysis किया तो पता चला कि this is a question and this is not a question. Form सबकी एक जैसी होती है, but you know their sense is something that is different. Due to the difference in sense, what happens, they can make different meaning. Is that clear? So this is what we have analysis. और ये discourse है, इसलिए इसको हम discourse analysis कहते हैं. और जब हम media discourse analysis की बात करते हैं, so it means we have to analyze the language or discourse of media that is used in media. Since language is something that is related to all walks of life, language की कोई boundary नहीं है. Language is used in politics, language is used in religion, language is used in social life. It is used in anywhere, everywhere you can use language. That is why it has no boundary and it is a very broad, term. And linguistic is a scientific study of a language. Now, what is media? Now let's talk about what is media. Yes, what is media? आपके सामने मैंने लिखा, लेकिन थोड़ा आपकी राय में चाहूंगा. व्हाट इज मीडिया? ये तो बहुत आम सी चीज है. Sir, a source of knowledge. Source of knowledge, gaining knowledge हो सकता है. Source of gaining knowledge. Right, very good. Or what is media? Yes, Arya. Yes, come on. What is media? So the word media comes from the Latin plural of medium. आपको ये जानकर बड़ी हैरत होगी कि मीडिया जो है प्लूरल फॉर्म है और सिंगुलर भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हकीकत में इसका जो सिंगुलर फॉर्म है दैट इज कॉल्ड मीडियम. In modern English, it can be treated as either a singular or plural noun. It can be treated in both ways. यानी कि modern English में ऐसे दोनों तरीके से treat किया जाता है. You can use singular verb and or plural verb both. You can use media is or you can also use media are. New plural form भी लोग बनाई जा चुकी है जिसको medias कहते हैं. Medias is also increasingly being used, such as the medias of several countries have been following the story. तो जो न्यू प्लूरल फॉर्म है वो मीडिया के साथ एस लगाकर मीडियाज भी कर दिया गया. Now, what is media? Media are the sources, or media is the source of communication or tools used to store and deliver information or data. There was a time in the past when, of course, we did not have many forms of media. It was difficult for us, for people who are living in
countries like lower middle countries or middle countries, very difficult for them to have communications. But now you can see with the development and progress of media, things have become very easy. Communication has become very easy. Gaining knowledge has become very easy. एक वक्त था कि लोगों को जो है बुक्स लेनी पड़ती थी बहुत सारी, या बुक्स लाइब्रेरी से लेनी पड़ती थी जाकर, और बहुत मुश्किल प्रोसीजर था. अब आप बुक्स को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज. वो किताबें जिनको हम डॉलर्स में खरीदा करते थे, अब वो हम इजीली पीडीएफ के फॉर्म में हासिल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं उनको. रिसर्च पेपर्स को हम पढ़ सकते हैं. मेनी अदर थिंग्स वी कैन डू विद द प्रोग्रेस ऑफ मीडिया. सो व्हाट इज बाय द वे मीडिया, और क्या इसमें आप इंक्लूड करना चाहेंगे? So media is a source of communication or tools used to store and deliver information or data, authenticate or unauthenticate. Means media is a source. Yes, sir. Media is a source where we get the knowledge. It may be authenticate, valid knowledge, or it could be a fake things. It could be what can we say? That is unauthorized. Okay, very good. Which means there is a problem of reliability. You mean? There is a problem of authenticity. Okay, very good. Yes, sir. ठीक है, ये understood. Very good. और कोई? Yes, can anyone, can any other friend want to share something? Okay, media is a source of communication or tools used to store and deliver information or data. ये तो बिल्कुल clear, confirm है, clear हो गया. Now you can see that in the past we had to face many problems in communication, especially if you wanted to communicate to someone else living in foreign country. Or we had to spend plenty of money and many other things. Things were very difficult. But now, with the help of Facebook, WhatsApp, and many other new things which we have in the market, communication has become very cheap and very easy. All these things are related to media. The term refers to components of the mass media communications industry like print media and electronic media. When you talk about media, so print media and electronic media, these both things come to our mind. The term medium is defined as one of the means of channels of general communication, information, or entertainment in society as newspapers, radio, or television. So medium is singular and media is its plural form. So electronic media and print media. इसके बारे में कोई शेयर करना चाहेगा? These are forms of media. Like newspapers. Like newspaper and yes. TV channels. TV channels, right? And papers. मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है ना? Information. Is my voice clear to all of you? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना किसी को? No, sir. Okay. So print media and electronic media. These are the two forms of media, print media and electronic media. Which media is,
old media, number one. Number two, easily accessible media. Sir, And print media is the older one, and it easily can. Sir, electronic media we can easily access. Print media was newspapers and the things that are in written form in hard copies in our hands, and we have to spend some money to get them. And electronic media, on the other hand, are it is a very recent discovery, or we can say this is a newer one, and we can access easily through so many apps, and this is cheaper than print media. You mean electronic media is cheaper than print media? Are you sure? Yes, sir. देखिए प्रिंट मीडिया का क्या है, प्रिंट मीडिया तो कहीं भी आप प्रिंट कर सकते हैं. इवन यू कैन डू वॉल चॉकिंग, यू कैन हैव प्रिंट ऑन योर शर्ट, यू कैन यूज दिस थिंग एनीवेयर एल्स. मतलब फ्री में भी आप इसको बहुत सी चीज़ें जो है प्रिंट मीडिया के थ्रू जो है वो लोगों को बता सकती है, कम्युनिकेट कर सकती है. एज आई टोल्ड यू दैट एवरीथिंग कम्युनिकेट समथिंग. मतलब जो भी हम Sir, but we are talking here about the media, a very formal form of media, that is newspaper or something else. अगर हमें कोई आर्टिकल अगर पब्लिश करवाना है तो ऑब्वियसली हमें उसके लिए पे करना पड़ेगा. Yes, you're और right. ऑन दी अदर हैंड अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू अगर कोई चीज भेजना चाहते हैं तो सर उसमें व्लॉगिंग भी आ जाती है, ब्लॉगिंग भी आ जाती है. तो हमें जस्ट अपने पास राइट करना है मोबाइल फोन के अंदर, और हम अपने जो है वो किसी भी सोशल अकाउंट के ऊपर उसको शेयर कर सकते हैं विदाउट स्पेंडिंग एनी पैनी, और फिर सर वो पूरी दुनिया तक चला जाएगा. तो आई थिंक दिस इज चीपर देन प्रिंट मीडिया. जो आपको शेयर करना हो या जो भी मतलब ये आपको दुनिया को बताना हो, so you mean that you can easily share through WhatsApp, Facebook and Twitter and other accounts. This is what you want to say. Yes. Okay. और इसके अलावा लेकिन उसमें भी आपके पास ऑप्शंस हैं. मतलब ये कि बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जिसमें आप you cannot freely you cannot have free access, but if you want to have free access then you have to pay heavily. तो इसके अंदर भी जैसे मिसाल के तौर पे मुझे कुछ किताबें हैं जो मुझे अपना एक आर्टिकल पब्लिश करवाना है. तो अगर मैं अपना आर्टिकल पब्लिश करवाना चाहूँगा तो उसके लिए मुझे डॉलर्स में पे करना होगा. ठीक है. अगर मैं फेसबुक पर डालूंगा तो वो उसकी कोई इतनी वर्थ नहीं है, कोई भी चोरी कर सकता है. लेकिन अगर मैंने उसे किसी जर्नल में पब्लिश करवाना हो या किसी इलेक्ट्रॉनिक उस पे मतलब करवाना हो तो डेफिनेटली हैव टू पे फॉर इट, देन इट विल बी सिक्योर. ओके. और कोई इसके अलावा प्रिंट मीडिया. टेल मी अबाउट द टाइप्स ऑफ प्रिंट मीडिया. The print media is the oldest form of media and inexpensive form of media as compared to electronic media. Electronic media is definitely expensive, and sometimes it is very expensive, sometimes it is less expensive, but it is as compared to print media expensive, because print media, as I told you, include newspaper, journals, magazines. Even if we write something on the wall, it is also the example of print media. Wall chalking. आपने देखा होगा लोगों को, आप जो भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उस प्रोडक्ट के ऊपर कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता है, वो भी एडवर्टाइजमेंट होती है. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड, इट ऑल्सो कम्युनिकेट्स टू यू समथिंग. आपको कोई चीज़ कम्युनिकेट कर रही होती है. दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ प्रिंट मीडिया. सो कैन यू गिव मी some other examples of print media? Sir, बुक्स, राइट. बुक्स हो गई, पम्फलेट्स हो गए, विजिटिंग कार्ड्स हो गए. अब विजिटिंग कार्ड्स में कितना खर्चा आता है, पम्फलेट्स में कितना खर्चा आता है. you can advertise your product, you can advertise your whatever you want with the help of pamphlets, leaflets, booklets. कुछ लोग मतलब ये गलत करते हैं वॉल चॉकिंग करके. दैट इज नॉट द राइट वे, दैट इज अनएथिकल. तो वो भी कर रहे होते हैं. फिर इसके अलावा कुछ लोग कहीं किसी की दुकान पेंट कर देंगे तो उसके ऊपर अपना जो है दे राइट देयर कंपनीज नेम. जैसे ये कोल्ड ड्रिंक्स वाले होते हैं, दे डू व्हाट, ये उनको दुकान वालों से जहाँ पे उनको दुकान समझ में आती है, पसंद आती है, तो वो उनसे कहते हैं कि हम आपकी दुकान का पूरा पेंट करवा देंगे. ठीक है, हमने बस अपना ये लिखना है. वो कहते हैं ठीक है भाई हमें पेंट चाहिए, पेंट कर दो, अपना लिख दो. बाद वो उनके यहाँ अपने पे जो ये चीज़ें भी रखवा देते हैं.
So what happens that they do business. So print media, these are the forms of print media. Any other thing that you have in your mind regarding print media? याद रखिएगा, discourse can be one word, it can be even one sentence, and it can be even one book. Discourse is something that can be any word, every that word or every that thing that communicates something, जो कुछ communicate करता हो. That is what we call discourse. And we have to Sir, realize this is very, sir, I have example. This is very informal and हमने कभी उस तरह से सोचा भी नहीं कि ये मीडिया की फॉर्म में आएगी, लेकिन आपने अभी बताया डेफिनेशन, तो उस तरह से जहन में आया कि हमारी जो व्हीकल्स के पीछे खास खुसूसन जो है वो हमारे रिक्शास के पीछे जो शेर व शायरी लिखी हुई होती है या वन लाइन लिखी होती है या कोई मैसेज डिलीवर होता है, तो वो भी प्रिंट मीडिया की फॉर्म में आता है. This is also print media. अब आप देखें ना, जब आप किसी रिक्शे वाले के पीछे कोई अजीब शेर पढ़ेंगे तो आपको उस रिक्शे वाले का पता चल जाएगा, उस रिक्शे वाले के बारे में पता चल जाएगा कि किस ज़हनियत का बंदा है. बात समझ में आई? इसीलिए कहते हैं कि जो हम बोलते हैं और जो हम कोई टी शर्ट पहन के आया है और उसकी टी शर्ट के ऊपर कोई अजीब सा मतलब भी लिखा हुआ है, तो आपको उस लिखे हुए होने से, उसको पढ़ने से आपको उस शख्स के बारे में भी काफी अंदाजा हो जाएगा कि ये किस किस्म का शख्स है. मैं तो कोई ऐसी टी शर्ट नहीं पहनूंगा जिसके ऊपर कोई ऐसी अजीब व गरीब किस्म की चीज लिखी होगी. I will avoid it because people will understand about my personality. They will understand. They will get a first-hand impression or first-hand knowledge about me, or about my personality, about my character. If I wear something like this, इस तरह से हम जो पहनते हैं या जो भी करते हैं, इससे भी we convey some meaning. All these communicate. All these things communicate. So that's why media is a very vast form. So print media तो बहुत मतलब ये कि वास्ट है, इसकी तो आप वसत का अंदाजा लगा नहीं सकते. बहुत इसमें मतलब आपको किताब खरीद रहे हैं, किताब के ऊपर आपको लोगो मिलेगा, ठीक है. आप कपड़े खरीद रहे हैं, कपड़े के ऊपर लाजमी कंपनी वालों ने अपना स्टिकर लगाया होगा, कुछ तो कुछ लगाया होगा. आप यू आर बाइंग शूज, यू मस्ट गेट समथिंग फ्रॉम द शूज एज वेल, राइट. ऑल दीज थिंग्स आर कन्वेइंग समथिंग टू अस, दैट इज कॉल्ड मीडिया. ओके, हम इसको मजीद कंटिन्यू करेंगे आफ्टर इंशाल्लाह 5 minutes ब्रेक, राइट. So don't go away. Inshallah, we'll meet after 5 minutes. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. तो Yes, sir. कोशिश ये होगी कि 2 classes हमारी मजीद हो जाए ताकि हमें पता चले कि ये क्या है. And inshallah then I will also record some lectures which I will send you. से मुराद है कि I will upload in the YouTube channel that right? YouTube channel of Okay. of the university. So inshallah after 5 Okay. minutes we are going to meet. Okay, sure. से ही ज्वाइन करेंगे क्लास नेक्स्ट वाले. I'll send you the link as well after creating it. So after 5 minutes, inshallah.